Well, 2 days after Gangster Mukhtar Ansari was buried, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi paid a visit to the gangster's family. Owaisi visited his residence in Ghazipur and paid tribute to Mukhtar Ansari. While meeting his son Umar Ansari, while expressing grief over Mukhtar Ansari's death, Owaisi took a veiled jibe at the BJP. He posted, and I quote, "Insha Allah, the light will break through this darkness. If you are then Moses will also definitely come." He then went on to once again blame the state government for Mukhtar Ansari's death. बातचीत क्या, हम सिर्फ इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। Well, the visit comes just a day after AIMIM and Apna Dal Kamerawadi announced an alliance in Uttar Pradesh for the Lok Sabha elections. The alliance has been named PDM, which means Pichhda, Dalit and Musalman. Speaking after alliance was announced, Pallavi Patel indicated that Owaisi can look after the interests of Muslims better than SP Chief Akhilesh Yadav. इतनी बदतमीजी उनसे की गई, एक मिसाल देना तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है, उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधे बैठे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। Well, you heard Pallavi Patel there. Through that statement and of course through the alliance, the message is very clear as far as the Muslim vote bank is concerned. According to Pallavi Patel, Owaisi represents them better, or his party represents them better, and perhaps would be able to cater to the vote bank better than Akhilesh Yadav. Clearly, this has also invited a reaction from Akhilesh Yadav. We'll try and connect with our reporters as well to get you more details. As far as Akhilesh Yadav is concerned, he has also put out a post. Now, the Samajwadi Party is monitoring this changing equation and dynamics very, very closely. We have Kritsween joining us with more details on Akhilesh's tweet. The new alliance is clearly being seen as a threat to the Muslim vote bank of the Samajwadi Party. And Mukhtar's death has become the latest issue for parties trying to woo Muslims. Over to you, Kritsween. Absolutely. You know, with not just Pallavi but Asaduddin Owaisi also trying to send out a message to Akhilesh Yadav that their alliance now, which is PDM, is going to cater better to the Muslim community in the state. That Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has only been fooling the Muslims. Here's how Akhilesh Yadav has also responded on social media, and in a very poetic style he says, and I quote, "नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक पर एतराज है, ना भूल तू ये हुक्मरान, ना कयामत तक ना हुआ किसी का राज." So he's talking about the extent of injustice. Very interesting, because Asaduddin Owaisi has also spoken about how their alliance now, Owaisi joining hands with Pallavi, with Apna Dal Ke, that is going to ensure social justice in the state of Uttar Pradesh when it comes to the Muslim voter. All right, Kritsween, thank you for getting us the details. And let's take a look at the confrontation that Akhilesh Yadav is referring to. Now, this happened on Saturday as supporters gathered to pay tribute to Mukhtar Ansari.
एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम ऐसा थोड़ी हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल से अधिक संख्या हम ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे, फिर करिए विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। We have Adeep joining us in the broadcast with more details. Adeep, on one hand, of course, the Samajwadi Party is monitoring the situation very, very closely because of the new alliance between Apna Dal and Mr. Owaisi. Well, definitely Samajwadi Party is closely monitoring the situation that's taking place in Uttar Pradesh. Yesterday, Pallavi Patel, who was the ally of Samajwadi Party, changed the side and joined hands with AIMIM Chief Asaduddin Owaisi. Owaisi was in Lucknow. They both held a press conference together in which they announced that they are making a new front, which is the third front in UP, and they named it PDM, Pichde, Dalit and Musalman. Pallavi Patel went on to say that there was some confusion in the PDA, which is of Akhilesh Yadav. There was confusion on A. Sometimes it was being referred as Agra, sometimes it was being referred as Alpsankhyak, and sometimes it was being referred as all. So we have clarified it, and we are with Muslims. The Asaduddin Owaisi said that 90% Muslims voted in favor of Samajwadi Party in 2022 elections. But then what happened to them? Even their leaders are not being backed up by Samajwadi Party. He was attacking Samajwadi Party on ST Hassan. Right. And so, Adeep, on one hand, this alliance, on the other hand, Mr. Owaisi visiting Mukhtar Ansari's house and, paying tribute has definitely put pressure on the Samajwadi Party. Leaders of the Samajwadi Party, remember, had leveled allegations against the state government, and they said there's some sort of a connivance between the state government, the STF and the authorities. They also, in fact, backed Mukhtar Ansari's son when he said that poison was being given to his father inside the jail. Well, Samajwadi Party has been backing up Ansari family, and all the spokespersons of Samajwadi Party, whether it is the spokesperson or Akhilesh Yadav, they are standing with the Ansari family on social media, on their statements. But the visit of Owaisi has created a pressure on Samajwadi Party, and now Samajwadi Party has asked its candidate Dharmendra Yadav, who's the relative of Akhilesh Yadav, to visit the Ansari family. Dharmendra Yadav will be visiting Ansari family shortly. He is expected to reach within hours to Ghazipur in his residence, and Samajwadi Party is under pressure from this move. But however, AIMIM is now saying that Akhilesh Yadav should himself, he should have been going over the Ansari's place. And AIMIM also attacked Samajwadi Party. Right. They are saying yes, that this war of words that you're talking about and the visit that you're talking about of Dharmendra Yadav comes only after the AIMIM took a jibe at Samajwadi Party, saying that the Samajwadi Party's leaders should have visited Mukhtar Ansari's family. We have Dinesh Sharma joining us on the broadcast. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. कैसे देख रहे हैं आप पार्टियों के बीच में ये जो वाद विवाद चल रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर पहले कौन गया, क्यों नहीं गया, जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को? नहीं, देखिए, जोड़ ये समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की और बहुजन समाज पार्टी की विशेषता है. और हिंदुस्तान में पूरे विश्व में कोई अपराधी हो और उसकी सांप्रदायिकता फैलानी हो, तो उसके लिए एकमात्र नेता पूरे देश में ये आपके ओवैसी साहब दिखाई पड़ते हैं. तो इनका करना एक आम बात. हत्या इन्हीं मुख्तार. I think we've lost that line with Dinesh Sharma. But this war of words, as far as the AIMIM and the Samajwadi Party are concerned, AIMIM said that the Samajwadi Party leader should have visited Mukhtar's family.
And clearly the Samajwadi Party was taken aback. Now the SP says its leader Dharmendra Yadav is also going to visit Ghazipur. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी को मुख्तार भाई के घर पहले जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि जनाब अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पर मुख्तार भाई का नाम तक लिखना गवारा नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर गाजीपुर पहुंच जाते हैं। गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार भाई के परिवार से मुलाकात करके अपनी ताज़ियत पेश करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे हैं। ओवैसी साहब के जाने के बाद हलचल एकदम से तेज़ हो गई आपकी पार्टी में। कहाँ तो आप उनका नाम तक नहीं लिख रहे थे, और अब आपने लेटर जारी करके धर्मेंद्र यादव जी को कहा है कि जाइए उनके घर। पूरी समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के साथ अपना स्टैंड करती है। मौत पे मातम पे हमारी भारतीय परंपरा में कोई सियासत तो की नहीं जाती। कल वो थे लखनऊ में और उन्होंने जाना ठीक समझा और जाना भी चाहिए था। आज धर्मेंद्र जी जा रहे हैं तो कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है।